Dear students and parents. I'm glad to be here as your computer teacher. It's Khurram here. Previously, you may have studied about the computer networks and their major components. We will keep the same pace, inshallah, for the next days ahead. But please be noted that you are not asked to write these notes on your copy yet. Until we may finish this chapter, and when we will finish this chapter, then I will advise you to make your neat copies for questions and answers as well to be written on them. And so let's start our today's topic, that is computer network and its types. So here's the first term, that is computer network. Most of you may be familiar with this term. A computer network is a group of computers that are linked to each other, that enables them to communicate with each other as well as to assist them to share their resources. Just like one of the definition is in front of you, set of computers connected together for the purpose of sharing resources. So what kind of resources they may share with each other, we will discuss it one by one. But let me tell you, the computers that are connected with each other are also called nodes as well in a computer network environment. A pictorial diagram you can observe on this slide, and here are the computer resources that can be shared among all computers that are connected together in a computer network. It may include network devices, printing devices, it means printer, network device mean router. All of these devices have their different works, their different functionalities, but they can be connected, they can be shared through a computer network. Similarly, data and applications can also be categorized as computer resources. So we are always surrounded by many computer networks in our daily routine life. We will see one by one by observing their types and categories. Here are the categories. So a computer network can be categorized by their size and usage, and they are mainly of three types. One by one we will see. Here are these. The first one is LAN, MAN and WAN. LAN stands for local area network, MAN stands for Metropolitan Area Network and WAN stands for wide area network. So सबसे पहले हम देखते हैं LAN के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है. बेसिकली local area network is a group of computers connected to each other in a small area such as building, office or school, lab. आपने देखा ही होगा, जैसे आपके कॉलेज के अंदर कुछ लैब्स हैं, आपकी बिल्डिंग के अंदर भी लैब है, उसके अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं. रेंज इज फ्रॉम 10 to 20 and they are connected with each other. तो इस तमाम सिस्टम को, इस एनवायरनमेंट को हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं. मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम. अब ये कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? थ्रू ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, और they can also be connected with each other वायरलेसली, लाइक वाईफाई सिग्नल्स के जरिए हम उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. As you can see, these are coaxial cable and twisted pair. So now we will learn about their advantages and disadvantages. Local area network is comparatively less costly because its area, its spanning is lesser than the other network environments. In local area network, data transfer rate is very high because traffic is very smaller than other networks. So smaller number of computers are connected with each other in local area network. That's why their transfer rate is very high.
this LAN provides higher security and it can share peripheral devices. Peripheral devices क्या होती हैं? आपके प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, इस तरह की जो भी डिवाइसेस जो आप अपने सिस्टम्स के साथ अटैच करते हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. एंड इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद इन अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क बिकॉज इसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, कम सिस्टम्स होते हैं, तो आसान होता है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते. एक लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स. इट मीन्स टू ट्रांसफर द डाटा. डाटा में बी अ पिक्चर, an ऑडियो, अ वीडियो, आपकी वॉइस मैसेज हो सकते हैं. तो ये तमाम सूरत टेक्सचुअल आपका मैसेज हो सकता है. ये तमाम तर कम्युनिकेशन कहलाती है बिटवीन टू कंप्यूटर्स. Then we will learn about some of disadvantages in local area network environment. The first one is needs skilled person to maintain because its maintenance is costly और skilled required होती है. So this is our first disadvantage in LAN, and the second one is special security measures are mandatory to stop unauthorized users because आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है LAN और आप नहीं चाहते कि कोई इंट्रूडर्स आपके सिस्टम के अंदर झांक सके, आपके डाटा फाइल्स को हैक कर सके. तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए होती हैं जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है. सो दिस वाज द होल अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द मैन नेटवर्क. MAN is basically abbreviated as Metropolitan Area Network that covers larger geographical area by interconnecting different LANs. It covers larger area rather than LAN. LAN तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक लैब की हद तक महदूद होता है, एक पर्सनल आपका नेटवर्क होता है, जबकि मेट्रोपॉलिटन एक पूरे सिटी के अंदर जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने की सलाहियत रखता है. So different LANs are connected through telephonic exchange line, and you can see this scenario in this picture. There you can see different LANs are being connected with the main server, and that is called Metropolitan Area Network. Now we will observe some advantages and disadvantages of this Metropolitan Area Network. The very first advantage is it's bigger than LAN. LAN का स्पैनिंग एरिया या कवर जिस एरिया को वो कर सकता है वो कम होता है, जबकि मैन ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है. और ये आप डिसएडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं लैन के अंदर कि वो स्मॉलर एरिया को सिर्फ कवर करने में इस्तेमाल होता है, लार्जर एरिया के लिए वो नाकाफ़ी रह जाता है. सिमिलरली इट्स डाटा ट्रांसफर स्पीड इज़ वेरी हाई एंड सम ऑफ डिसएडवांटेजेस आर हेयर. इट्स वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज यू आर गोइंग टू कवर द एरिया up to a city. तो आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा अफोर्ड करने पड़ेंगे, आपको रिसोर्सेज ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे. एंड सेम इफ़ यू आर गोइंग टू कवर अ लार्जर एरिया देन यू नीड हायर स्किल्स, टेक्निकलिटीज may involve, and then it would be very complex to maintain your network. So these are some disadvantages and advantages of MAN. Now we will move to learn about wide area network, WAN. Basically it's a network that covers the very largest geographical area such as a state, it can be a province, it can be a country or even the whole world. Internet is the best example of WAN, and most of you know about internet. इस पिक्चर के जरिए भी आपको वाजे हो रहा है कि वैन की एक्सपेंशन क्या है, किस किस्म की नेटवर्क्स को होल्ड करता है, इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज और क्या इसके अंदर मेंटेनेबिलिटी के ऑप्शन प्रॉब्लम्स अक्कर हो सकते हैं. सो हियर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन. The very first advantage, users at different locations are connected to a central server. Mean आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके जो फेसबुक का सर्वर है, यूट्यूब का सर्वर है, वो सैन फ्रांसिस्को और दीगर मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, सिटीज के अंदर पड़े हैं जहाँ पर आपको डाटा की एक्सेस होती है. तो रिमोटली एक्सेस देता है वैन, जबकि जो एक्सेस आपको लैन के अंदर और मैन के अंदर नहीं होता. सिमिलरली यू कैन control distant locations and as well as offices. One of the best example is this environment in which I am delivering the lecture and you are learning this lecture, and we are controlled by the internet as well. So इसकी geographical expansion को देखते हुए आप बता सकते हैं कि इसका सेटअप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, साथ में इसको मैनेज करना और ट्रबल शूटिंग भी बहुत